Hello semester 4. Now we are seeing paper 10 Lifestyle and Nutrition Unit 1. आपका यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू ब्यूटी एंड न्यूट्रिशन, डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी, अंडरस्टैंडिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड. Now we see what is the beauty. Beauty means eating a diet clear and free of toxins as possible. They protect the body from damage and this increases longevity and keep us looking good and feeling younger. For maintenance of skin properly, we need to take proper diet. Everyone wants to look good and beautiful from the outside appearance and wants to feel younger and energetic from inside. And it will happen if and it will only happen if we will take good and proper care of our skin to look beautiful. Skin of face is the first attraction of our body, whatever we eat. They affect every organs of our body, and our skin being the largest organs of the human body. A proper nutrition is very important for our skin maintenance as a health manner. Some studies have linked dietary pattern with less wrinkles on the skin, high intake of vitamin C, lower intake of fat, and carbohydrates were associated with better skin aging appearance. Other specific studies have suggested that higher intake of vegetables, olive oil, fat, monosaccharides, legumes, and little amount of butter and sugar products reduces the wrinkles of the skin. By consuming a diet with high fruits and vegetables which provide a variety of antioxidants and fiber, especially blueberries and strawberries are very good for skin. We can also take whole grain because they are excellent source of fiber which has been proven to reduce inflammation. Saturated fats increases inflammation, so we have to reduce it from the diet. We should eat more omega-3 fatty acids because they are powerful inflammatory agents. We can get omega-3 fatty acid through sea fishes. It is better to eat wide range of antioxidants rich food, consume spices like oregano, turmeric, ginger, green tea, dark chocolate, and red wine. Always try to avoid preserved food like jam, ketchup, and cheese. Now we see how nutrition is related to skin and beauty. स्किन और ब्यूटी से न्यूट्रिशन का क्या संबंध है, कैसे रिलेटेड है. A child has a glowing and clear skin as it grows older and approaches teenager. The skin shows several changes, and at this juncture is if adequate nutrition and rest are not taken, the teenage develops acne and pimples which marks has appearance. The relationship between nutrition and skin health and appearance is well seen by the urticarial eruption which occur due to the circulation of foreign or toxic protein in the bloodstream. Foods that are particularly associated with urticaria is in susceptible individual are shellfish, strawberries, eggs, meat, etc. This reaction may be due to decomposed products or due to penetration of protein material into the bloodstream without proper digestion or to allergy on the part of the individual concerned. In this case, the skin has been the first to indicate that all is not well with the function of the body. What
स्किन बहुत पहले से ये बताने लग जाती है जब हमारे बॉडी में कुछ ये सही नहीं हो रहा है या कुछ हमारे प्रॉपर हमारे ब्लड स्ट्रीम में कुछ फॉरेन ऑर्गन्स आ गए, फॉरेन कुछ बाहर की तत्व उसमें आ गए, कोई विषाक्त चीज़ आ गई है, तो वो हमारी स्किन पहले ही रिफ्लेक्ट कर देती है कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी या कोई भी चीज़ की कमी, जो प्रॉपर हम न्यूट्रिशन अगर हमारी बॉडी डाइट में हम नहीं ले रहे हैं. Many a times skin is the first and sometimes the only indicator of a deficiency in the diet. Vitamins and certain food factors are associated with skin health. विटामिन्स और कुछ फूड फैक्टर्स जो स्किन से हमारे रिलेट होते हैं, सबसे पहले स्किन पे ही उसका रिफ्लेक्शन दिखता है. विटामिन्स में हम देखें, विटामिन ए डेफिशिएंसी इज सीन बाय hyperkeratosis involving deposition of keratinous material in the hair follicle and on the skin in general. विटामिन ए की भी डेफिशिएंसी हमें हेयर फॉलिकल में और स्किन में हमें दिखती है. Now next, riboflavin or vitamin B2 is of value in treatment of eczema of the scrotum or end of the mouth, redundation of the lips and fissures in the angles of the mouth are symptoms of riboflavin deficiency. राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी होने पे ये राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी होती है जो माउथ के एंगल्स में, मुंह के कोने कट जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, ये हमें दिखता है. नियासिन इज़ यूजफुल इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ dermatitis of the disease pellagra, wherein skin becomes inflamed and eczematous. These lesions are usually symmetrical. All these three vitamins are constituent of enzymes, hence their relationship to the skin and mucous membrane is not surprising. Pyridoxine or vitamin B6 is found to be amazingly effective in treating seborrheic dermatitis, alopecia, eczema with seborrheic features and eczematous eruption of unknown etiology. खाने में नहीं पता चलता या किस तरह से प्रॉपर हम डाइट में विटामिन B6 या पायरोडॉक्सिन नहीं लेते हैं, तब ये प्रॉब्लम हो जाती है, डर्मेटिस प्रॉब्लम. ना विटामिन सी और एक्सकॉर्बिक एसिड इज़ अ क्लिनिकल necessity for the rapid and healthy healing of wounds and to prevent scurvy, which is also manifested on skin. Vitamin D has been given dramatically favorable result in the treatment of cutaneous TB and hence should for the first time that a vitamin therapy may cure a condition which is not due to a vitamin deficiency. Essential fatty acids have also been found to play an important role in skin health. From all these observations can realize the importance of good nutrition for a healthy skin. हमने देखे इन सब एग्जाम्पल से कि किन किन वाइटामिन्स की कमी से, डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, किस से वो स्किन पे हमारे शो होता है. इस एसेंशियल फैटी एसिड्स की भी कमी से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. तो ये बताता है कि न्यूट्रिशन और स्किन का, ब्यूटी का, हेल्थ का आपस में बहुत गहरा संबंध है. फ्रॉम ऑल दिस ऑब्जर्वेशन कैन रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर अ हेल्दी स्किन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ गुड एंड क्लीन स्किन. Teenagers generally ignore a good diet and eat all types of junk food, oily, spicy, appealing to the tongue, but repugnant to the clean and glowing skin. ग्लोइंग एंड अच्छी क्लीन स्किन के लिए वो तो घातक होते हैं, बट वो माउथ को, हमारे मुंह के स्वाद को बहुत अच्छे लगते हैं. जंक फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, तो वो टीनेजर उसको लाइक करते हैं. This affects their intake of a well-balanced diet. Changes occurring in hormones of their body also cause pimples to appear on the skin. जिसको हम जब पिंपल के रूप में उनके चेहरे पे दिखता है तब वो हमको रियलाइज़ होता है, यंग टीनेजर्स को दिखता है.
Acne and pimples make their way as eruption on the cheeks and the forehead. Such eruption on the cheeks and the forehead, such eruption can be minimized if the diet contain plenty of fresh fruits and vegetables. बहुत सारा पानी, वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स लेने से इसको हम कम कर सकते हैं. यंगस्टर टीनेजर्स के जो ये पिंपल्स निकलते हैं या एक्ने हो जाता है, तो एक प्रॉपर वेल डाइट लेने से इसको ठीक किया जा सकता है. होलसम सीरियल्स एंड पल्सेस एंड मॉडरेट इनटेक ऑफ फैट फूड्स. अ ग्लोइंग स्किन reflect the condition of physical fitness of a well-nourished individual. Hence, we can say that nutrition is directly related to beauty.